to whom the object is accelerating. This acceleration is represented as g, and its units are similar to that of acceleration, that is, meters per second square. You know that there is a gravitational force between any two bodies. We know that g is the universal constant of gravitation. How is g, which is the acceleration due to Earth's gravity, different from the universal constant of gravitation, g? Perform this simple activity and try to evaluate how Earth's gravity affects the motion of the objects under its influence. Gravitation affects many aspects of our universe. Free fall. Bodies that are under the influence of the force of gravity alone are said to be in free fall. Capital G versus small g. During this motion, bodies are accelerating. For Earth, this acceleration due to gravity is denoted by small g, and is different from capital G, which is used to represent the universal constant of gravitation. Motion under gravity. The acceleration provided by gravitation is independent of a body's mass. Hence, all objects accelerate at the same rate in free fall. Next is mass and weight. Have you ever weighed yourself? This boy is weighing himself on a weighing machine. Looks like the machine is malfunctioning. How can someone weigh 294 newtons? Isn't a newton a unit of force? Let us try to solve this confusion. What do we already know about mass? From the previous lesson, we know that mass is the measure of inertia. It remains the same in different environments and locations. We know that the Earth exerts a force of gravitation on all objects near it. This force is dependent on the mass of the object and the value of the acceleration due to gravity. It is referred to as the weight of an object and is hence expressed in newtons, which are the units of force. So is weight a vector quantity. Why? Now, going back to the boy on the weighing machine at the museum, we can see that the machine is not malfunctioning. The machine correctly gave the boy's weight in newtons. His mass, on the other hand, is 30 kilograms. A spacesuit weighs somewhere around 127 kilograms.
How are astronauts able to carry such heavy suits in a space station or on the moon? We now know that weight is dependent on the mass of an object and the acceleration due to gravity which is acting on it. Let's find out how a person's weight will change on the moon. The moon's mass is smaller than that of the Earth. So objects on the moon weigh 1/6 of their weight on the Earth. This we have read yesterday now, that objects on the moon weighs 1/6 of their weight on the Earth. Hence, the force of gravitation on the moon will also be less. When one weighs objects on the moon, one finds that their weight is 1/6 of their weight on Earth. Let's take a tour of the solar system and find out what your weight would be on the Sun, the Moon, and the planets. See, अगर हम अर्थ पर वेट है 89, तो what will be the weight on moon? Your weight will be 15.13. Is it clear? What will be the weight on moon? It will be 15.13. ठीक है? Next, अगर हम कोई और planet feel कर रहे हैं, suppose we can change the weight here also. अगर हम यहाँ पर डालते हैं 60. दिस इज अर्थ वेट। अर्थ पर हमारा वेट मान लो 60 है। अगर हमें मून पर चेक करना है कि मून पर क्या होगा, तो इट विल बी 10 न्यूटन। इज इट क्लियर? सपोज हम यहाँ पर डालते हैं, हमारा अर्थ वेट है 120। व्हाट विल बी द वेट ऑन मून? On moon will be 20 Newton. Is it clear? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? So these are the specifications about mass. मास आपका किलोग्राम्स में होता है, जी इंडिपेंडेंट होता है, स्केलर है। इसी तरह से वेट के बारे में दे रखा है, दैट इज इन न्यूटन्स, वेक्टर क्वांटिटी, जी डिपेंडेंट। इज इट क्लियर? तो इसके बाद डिस्कस करेंगे हम एनसीएशंस। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अगर डिस्टेंस को आप हाफ कर देंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किस तरह से चेंज होगा, ठीक है? व्हेन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दैट इज आर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, अगर आप आर की जगह r/2 कर दें तो नीचे वाली 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बिकम 4, और 4 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, देन फोर्स वुड बिकम 4 टाइम्स, ठीक है? उसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर masses. Why then a heavy object does not fall faster than a light object? Gravitational force acts on all objects in proportion to their masses.
but a heavy object does not fall faster than a light object because of the reason that acceleration is force upon mass. Force is directly proportional to mass, therefore acceleration is constant for a body of any mass. Clear? उसके बाद है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का बिटवीन अर्थ एंड 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस. ऑब्जेक्ट का मास क्या है 1 किलोग्राम. ठीक है. मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24, रेडियस इज 6.4 × 10⁻6 एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है आपका दैट इज 6.67. उसके बाद आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे F = Gm small m upon r². You will substitute the values and you will get the answer as 9.8 Newton. So magnitude of gravitational force between earth and 1 kilogram object will be 9.8 Newton. उसके बाद है earth and moon are attracted to each other by gravitational force. Does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or the same as the force with which the moon attracts the earth? So earth attracts the moon with force that is same as the force with which the moon attracts the earth. From Newton's third law of motion, forces of action and reaction are always equal and opposite. So the force that will be exerted by earth on moon is equal and opposite to the force that is exerted by moon on earth. Next is, if moon attracts the earth, why does the earth not move towards the moon? Because the force exerted by earth on moon is used in changing the path of moon from straight line to circular path. Moon attracts the earth with the same force, but the earth is too heavy to move towards the moon. Distance between earth towards the moon is so small that it cannot be detected. Now what happens to the force between two objects if mass of one object is doubled? अगर एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया जाए तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? फोर्स बिकम्स ट्वाइस, फोर्स 2 गुना हो जाएगा. डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड. अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा? फोर्स 1/4 हो जाएगा. अगर ट्रिपल कर दिया जाए तो फोर्स 1/9 हो जाएगा. और उसके बाद अगर मास दोनों ऑब्जेक्ट का डबल कर दिया जाए तो 2 × 2 इट विल बिकम 4. मास हो जाएगा आपका 4 टाइम्स. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस सबको पता है. फॉर मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून एंड अदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ. ठीक है. जो भी आपका फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड अदर फेनोमेना. टाइड्स के बारे में हमने पढ़ा था. इज इट क्लियर? एक्सेलरेशन क्या होती है फ्री फॉल की? ऑब्जेक्ट्स दैट आर मूविंग टुवर्ड्स अर्थ ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन देम आर सेड टू बी इन फ्री फॉल. ये जो फोर्स होता है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट्स में. तो एक्सेलरेशन फ्री फॉल की क्या कही जाती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट? Gravitational force between earth and an object is called earth's gravity. तो क्लास यहाँ तक हमने NCERT क्वेश्चंस कर लिए डिस्कस. तो आज हमारा ये चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन कंप्लीट होता है. आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर्स. आप लोग अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेना. ठीक है. प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑल्सो आई विल सेंड यू. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आपका बस यही होमवर्क रहेगा कि आपने इस चैप्टर को दोबारा रीड कर लेना और जो मैं क्वेश्चन आंसर्स भेजूँ आप कॉपी में लिख लेना. ठीक है. तो ये चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू.